Content writing and copywriting are almost the same thing, right? Wrong. Well, technically, you could say that they are somewhat similar because, well, both of them do involve writing. But when you dive a bit deeper, you realize that both of these skills are actually completely different in every single aspect. Stuff like the way you conduct research, the thought process, the purpose, the actual writing part, and so many other things. With that said, there are still some similarities between content writing and copywriting, and knowing those similarities will actually help you to leverage your content writing skills to seamlessly transition into copywriting. In this video, we will go over the similarities and differences between content writing and copywriting and everything in between. So make sure to watch this video till the very end because this video will change your perception and it will help you to make an informed decision as to which type of writing is best suited for you. Before we get started, in case you are new to the channel, my name is Armash Kamal and I'm the highest paid copywriter here in Pakistan with over 2,500 copy projects under my belt. Over the years, I have written almost every single type of copy in every major niche for my clients, and I have even put together first of its kind high converting sales funnel of my own here in Pakistan. Well, without any further delay, let's take a look at some of the differences between copywriting and content writing. So number one, content is always written to educate and inform the audience. Copy, on the other hand, is always written to persuade and convert the audience. कंटेंट जिसके अंदर आपके पास ई बुक्स आ जाती हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट आ जाते हैं, यूट्यूब वीडियोस आ जाती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती हैं, न्यूज़लेटर आ जाते हैं, ये जितने भी टाइप ऑफ कंटेंट है इनको लिखा जाता है जस्ट टू एजुकेट द ऑडियंस, इन्फॉर्म द ऑडियंस एंड टू एंगेज देम ऑफ कोर्स। जबकि अगर हम कॉपीराइटिंग की बात करें तो इसके अंदर वेबसाइट कॉपी जिसके अंदर आप ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं, सेल्स पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस जिन पे आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, एड्स कॉपी आ जाती है जिसमें फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, ट्विटर एड्स, स्नैपचैट एड्स, एनी सॉर्ट ऑफ एड्स फॉर दैट मैटर। इसके साथ साथ वीडियो सेल्स स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, वो वीडियो स्क्रिप्ट जो किसी भी चीज को सेल करने के लिए लिखी जाती हैं। इसके साथ साथ आपके पास सेल्स ईमेल के सीक्वेंसेस आ जाते हैं, अगेन द ईमेल्स दैट आर रिटन टू सेल स्टफ। तो आप नोटिस करेंगे कि कंटेंट और कॉपी की टाइप्स भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। वो किसी और टाइप की चीजों के लिए लिखी जाती है कंटेंट जो है, और कॉपी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों के लिए लिखी जाती है। और एक मेजर डिफरेंस ये है कि कंटेंट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन नहीं होता, जबकि कॉपीराइटिंग के केस में एट द एंड ऑफ एवरी सिंगल पीस ऑफ कॉपी यू हैव अ क्लियर कट सिंगल कॉल टू एक्शन। नंबर टू, कंटेंट डज नॉट जनरेट इंस्टेंट सेल्स और रेवेन्यूज, जबकि कॉपी जो है इट डज जनरेट इंस्टेंट सेल्स एंड रेवेन्यूज, और जो सेल्स और रेवेन्यूज इससे जनरेट होते हैं दे आर यूजुअली वेरी इजीली मेजरेबल एंड ट्रैकेबल। अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें तो इन सम केसेस दे कैन जनरेट सम रिजल्ट्स, स्पेशली इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सीटीए एट द एंड ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट और एन आर्टिकल। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर किसी भी ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल के एंड पे कोई सीटीए होगा तो वो सीटीए चाहे वो बटन भी है, उस बटन का टेक्स्ट भी जो लिखा जाएगा वो एक्चुअली कॉपीराइटिंग ही कहलाएगा एंड इट शुड टेक्निकली बी रिटन बाय अ कॉपीराइटर। और अगर कोई सीटीए नहीं है तो डाउन द रोड मे बी 5 to 6 months later when your blog post, article or website actually start to rank higher on the search results, some people might eventually buy your products. So in that case content will play some role to make sales. लेकिन जिस पेज पे आके वो actually buy करेंगे या जिस फॉर्म को वो यूज करेंगे to buy the product, again that form text or that page copy will again be written by the copywriter. So at the end of the day, content almost never is written to generate sales or revenues, and copy is almost always written to generate revenues, persuade people and to drive them to take a particular action. Number 3, और ये दूसरे पॉइंट से लिंक्ड ही है, कंटेंट इज नॉट वेरी हाईली पेड, जबकि कॉपीराइटिंग ऑन द अदर हैंड इज एक्सट्रीमली हाईली पेड। और उसकी रीजन यही है कि बिकॉज कंटेंट के अंदर आपको डायरेक्टली सेल्स और रेवेन्यूज नहीं मिल रहे होते, इसीलिए क्लाइंट्स आर यूजुअली वेरी हेजिटेंट टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू कंटेंट राइटर्स। जबकि अगर हम कॉपीराइटिंग की बात करें तो क्योंकि क्लाइंट्स को डायरेक्टली सेल्स एंड रेवेन्यूज मिल रहे होते हैं, दैट इज व्हाई दे नो that the better the copywriter they hire, the more results, the more sales, the more revenues they will be able to generate. इसीलिए they are willing to pay top dollars, premium price to good high converting copywriters. Number 4, content is almost always paid on per word basis. जबकि अगर हम कॉपी की बात करें तो it is usually paid based on per project basis. It can also be paid based on per hour, and sometimes it can even be paid based on number of words, just like content, especially if you are offering your services on Facebook, locally or on platforms like Fiverr. लेकिन ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो per word rates और prices आप content के चार्ज कर रहे होते हैं, कॉपी के rates per word basis पे भी significantly high होते हैं as compared to content writing. As a reference, I would say that you can easily charge at least 10 times the per word price as a copywriter, even if you're just starting out. And number 5, जो हमारा final difference है between content and copywriting,
वो है कि कंटेंट राइटिंग ऑलमोस्ट नेवर फॉलोज एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क, जबकि अगर हम कॉपी की बात करें तो इट ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और अ फ्रेमवर्क। इसके साथ साथ जो मैंने पहले भी आपको बताया कि कंटेंट के एंड पे कभी भी कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता, यूजुअली कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता। अगर हो भी सही तो इट्स अ वेरी सॉफ्ट CTA, लाइक टेकिंग देम टू अनदर ब्लॉग पोस्ट और एन आर्टिकल, जबकि कॉपी के केस में देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सिंगल क्लियर कट कॉल टू एक्शन एट द एंड ऑफ एवरी सिंगल पीस ऑफ कॉपी। सो देयर यू हैव द डिफरेंसेस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनके डिफरेंसेस बड़ा क्लियरली समझ आ चुके होंगे। सो नाउ इट्स टाइम दैट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, और आप कैसे इन सिमिलैरिटीज की बेस पे कॉपी के अंदर बड़ा इजीली ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, because content and copy both are actually forms of writing, तो एक तो similarity ये होगी that they're both actually forms of writing, and two, they're both actually written to engage the target audience। अगर आप content की बात करें तो आपने target audience को educate करने के साथ साथ और inform करने के साथ साथ engage भी जरूर करना है, because अगर आप उनको engage नहीं कर रहे तो आपकी blog post को article को end तक पढ़ेंगे नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप उनको एजुकेट और इन्फॉर्म कैसे करेंगे? एंड ऑल्सो जितना ज्यादा देर आप अपनी ऑडियंस को रिटेन करते हैं पेज के ऊपर, उतना ज्यादा आप गूगल और डिफरेंट सर्च रिजल्ट रैंकिंग के ऊपर हायर रैंक करते हैं। और अगर हम कॉपी की बात करें, अगेन एंगेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को एंगेज नहीं करते, आप उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको रिटेन नहीं करेंगे, वो आपके पीस ऑफ कॉपी को एंड तक नहीं पढ़ेंगे, और अगर वो आपकी कॉपी को एंड तक नहीं पढ़ते तो आप उनको अपनी ऑफर कैसे देंगे, कॉल टू एक्शन कैसे देंगे, और कोई भी सेल्स जनरेट कैसे करेंगे? सो इवन एज अ कंटेंट राइटर आप अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए कुछ टेक्निक्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जैसे कि यू आर ट्राइंग टू मेक योर राइटिंग फ्लो स्मूथली, यू आर ट्राइंग टू कीप इट ग्रामेटिकली करेक्ट, एंड यू आर ट्राइंग टू कीप इट एंगेजिंग ऑफ कोर्स। इसके साथ साथ यू माइट also sometimes use storytelling, similes and analogies to actually make the concepts easier for your target audience and to again retain them for longer so they read your blog post or article or any other content piece till the very end. Not only that, but as a content writer, you already know how to overcome the writer's block, how to write freely, and how to let your creativity really flow. And there are many other things that you're already using and leveraging as a content writer. So all you have to do next is to actually understand the elements of persuasion, structure, formulas, and the best practices that are used in copywriting. इसके साथ साथ what you have to do is to read good copy and actually practice writing copy. और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, you will soon be ready to transition from content writing to actually becoming a very good high converting copywriter. इसी के साथ साथ आई होप कि इस वीडियो में आपको कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बड़ा क्लियरली समझ आ गए होंगे और आपको ट्रिमेंडस वैल्यू मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं विच आर द पॉइंट्स दैट यू स्ट्रांगली एग्री विद एंड इफ देयर इज समथिंग यू एक्चुअली डोंट एग्री विद। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड टू माय अपकमिंग वीडियोस। मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें जहां आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं और एक लाइक माइंडेड एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स की कम्युनिटी के साथ आप डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। लिंक आपको फेसबुक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इफ यू वांट टू किक स्टार्ट योर कॉपीराइटिंग जर्नी, आई एम एक्चुअली लीविंग द लिंक टू द AKC copywriting workshop, which is a workshop that I have created to help newbies, complete beginners, to go from complete beginners to actually mastering the basics of copywriting from A to Z by the end of this workshop. Disclaimer, this is a paid workshop, but you can check out all the details on the sales page through the link that is given in the description below. इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक और हाईली वैल्यूएबल कॉपीराइटिंग रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।